Bismillahirrahmanirrahim. Let's read a case scenario on brucellosis. A 26-year male patient, milk salesperson by occupation, who also used to rear his cattle as a routine, presented with complaints of intermittent, which means undulating, fever, undulating in nature, that started gradually 20 years before his recent admission. Fever was associated with anorexia, vomiting, generalized myalgia, and weight loss. On physical examination, enlarged cervical lymph nodes, enlarged liver, and spleen was noted. Lab tests shows pancytopenia. So what are the presenting complaints? इस सिनेरियो से हमने क्या क्या बातें सीखी हैं. नंबर 1, जैसे उन्होंने बताया कि ये जो सारे सिम्टम्स हैं दे स्टार्टेड 20 years बिफोर हिज रीसेंट एडमिशन. सो इस वजह से कहा जाता है कि जो इस डिज़ीज़ का जो इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज़ 1 to 3 weeks. ठीक है, अगर कंसिडरिंग 7 days एंड 3 weeks, ऑलमोस्ट 21 days. ठीक है, स्टार्ट होता है द डिजीज़ विद नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स लाइक फीवर, चिल्स, फटीग, मलेज, एनोरेक्सिया एंड वेट लॉस. So here you can see there's a Bruce form which is here, and this is actually Bruce himself, the farmer who has actually acquired this disease. You can see that he is having fever, ठीक है, उसको chills हैं, fatigue है, and overall his appearance show that he is very anorexic. ठीक है, और इस disease जो onset है once after 21 days, it can be gradual and it can be acute. ठीक है, सो देयर इज़ एन अनड्यूलेटिंग फीवर पैटर्न. ठीक है, अनड्यूलेटिंग फीवर पैटर्न क्यों है? बिकॉज ब्रूसेलोसिस बैक्टीरिया जो होता है दैट इज़ वेरी स्लो ग्रोइंग. ठीक है, सो दैट इज़ वाई जब बैक्टीरियल काउंट ज़्यादा होगा इट विल टर्न इट इनटू हाई ग्रेड फीवर एंड देन इट मे गेट लो ग्रेड. ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन यू विल बी सीइंग enlarged lymph nodes. ठीक है, एंड hepatomegaly and splenomegaly, and on blood CP you'll be seeing pancytopenia. Acha, before we proceed further, let's talk about the various species of brucellosis. So brucellosis में there's one species that is called Brucellosis militensis, जो कि जिनका reservoir क्या होता है goat and sheep. So before we proceed further, I need to tell you that brucellosis is a zoonotic disease which is transmitted from animals to humans. यानी कि इसमें जो reservoir होता है of the bacteria और virus और fungus और parasite, ठीक है, वो क्या है? That is an animal, always an animal, and that can be transmitted directly from animal to human, or it may be transmitted by the means of vector. But in brucellosis there is a direct transmission, either by the ingestion of unpasteurized milk or by direct contact through the infected parts of the animal. ठीक है, in the slaughterhouse. ठीक है, so the infected people are either the milkman, the butchers, ठीक है, the vets and the lab workers who are actually dealing with bacteria. ठीक है, so there are 3 species. There is Brucella militensis, which is जिनमें reservoir क्या, that is goats and sheep, and Brucella militensis is actually the most severe form. अक्सर नाम सा लगता है कि abortus may be the most severe form, but Brucella militensis infections, they tend to be more severe and prolonged. The second is abortus, and that is reservoir इसमें क्या है, cattle है, and suis इसमें जो reservoir है, these are pigs. So here in this picture, ठीक है, ये यहाँ पर हमने देख लिया ना कि animal reservoir are the farm animals. So you have cow and you've got pig here. ठीक है, this जो cow है, ठीक है, इसके ऊपर this shows the liver, ठीक है, and this shows the spleen, which liver is on the right and the spleen is on the left, and they're enlarged on examination. ठीक है, और इसके अलावा ये जो मिल्क है, ठीक है, that shows the unpasteurized milk, and the hills they actually represent the undulating fever, ठीक है, that takes place here as a manifestation of brucellosis. So what are the other names for brucellosis? Brucellosis is also called Malta fever, Mediterranean fever, undulating nocturnal fever, और typhoid-like fever. ठीक हो गया. Brucellosis के characteristics क्या हैं? It is a gram-negative rod that lacks a capsule. ठीक है, it is slow growing, so that is why it has a longer incubation period, and likewise जब हमने culture करना है, so you have to give a longer duration for culturing it. ठीक हो गया. अच्छा, अब इसके बाद let's talk about its pathogenesis.
ठीक है, पैथोजेनेसिस इस तरीके से है कि वंस दिस यू गेट इन कॉन्टैक्ट आइदर बाय इंजेक्शन और बाय स्किन, आप यू नीड गेट कॉन्टैक्ट विद दिस बैक्टीरिया विच इज़ ब्रुसेला, तो क्या होता है कि ये लोकलाइज हो जाता है इन योर रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, ठीक है, एंड फ्रॉम योर रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम मीन्स your monocytes and your macrophages, it localizes in the monocytes and macrophages of your spleen, of your liver and of your lymph nodes, ठीक है. अब ये ऑर्गेनिज्म किसके अंदर है, एक मैक्रोफेज के अंदर इनक्लोज्ड है, सो दैट इज़ वाई इट कैन नॉट इवन बी किल्ड बाय एंटीबॉडीज़. तो फिर हमारा होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म जो है, जब वो एक्शन लेता है तो वो ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन स्टार्ट कर लेता है, यानी कि इंक्रीज़ कर देता है द काउंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन द लिम्फोसाइट्स एंड द एपिथेलियोइड जायंट सेल्स, and that can actually that host defense can actually lead to the formation of focal abscesses. ठीक है, फीवर क्यों होता है, फीवर इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ एन एंडोटॉक्सिन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड नो एक्सोटॉक्सिन इज़ प्रोड्यूस्ड इन ब्रुसेला. अच्छा, फिर उसके बाद समटाइम्स क्या होता है कि द पर्सन डज नॉट कंप्लीट द कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट आर गिवन, ठीक है, टू द पर्सन, सो दैट दोज पीपल बिकम क्रॉनिक कैरियर्स. एंड जो क्रॉनिक कैरियर्स होते हैं उनमें जो फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन है दैट इज़ ऑस्टियोमिलाइटिस. सो ऑस्टियोमिलाइटिस इज रिप्रेजेंटेड इन दिस पिक्चर बाय फिश बोन्स. ठीक हो गया. एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि ब्रुसेला कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय eating cheese, ठीक है, which is made from unpasteurized goat milk products. ठीक है, so how can we actually diagnose, that is using blood cultures or bone marrow cultures. ठीक है, लेकिन एक important बात आपको पता नहीं चाहिए कि जनरली when we do cultures, so जो आपका incubator होता है that contains 5% कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ पर ब्रुसेला को ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है ड्यूरिंग इंक्यूबेशन, सो इट नीड्स 10% कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग इंक्यूबेशन. And the other diagnostic or the gold standard for the diagnosis of Brucella is SAT test, which is basically slide agglutination test, ठीक है, with Brucella anti-serum, ठीक है, and you can also check antibody titer, ठीक है, titer of at least 1 to 1/60 in the convalescent phase serum sample is diagnostic, and you can also go for a PCR test or ELISA test. The treatment, the WHO recommendation, take it for the treatment of Brucella is from the rifle you have to remember rifampin, and from this cycle you have to remember a tetracycline which is doxycycline. It can also be given in combination with streptomycin. So the treatment of choice is doxycycline, to which either streptomycin or rifampin is added. There is no significant resistance to these drugs, and the prevention is pasteurization of milk and the immunization or the vaccination of animals, ठीक है, ऑफ द एनिमल्स. ठीक है, ह्यूमन वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, एंड इट्स बेटर टू स्लॉटर द इन्फेक्टेड एनिमल्स बिफोर दे स्प्रेड टू द हेल्दी कैटल और बिफोर दे स्प्रेड टू द अदर हेल्दी फ्लॉक.